हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तान्या एंड जो लोग मुझे जानते हैं, मैं इस चैनल पे यूजुअली अपने डांस वीडियोस डालती हूँ या कुछ ट्रैवल व्लॉग्स डालती हूँ। काफ़ी इनएक्टिव रही हूँ ऑन दिस चैनल एज हमारा एक अलग डेडिकेटेड चैनल है जिसमें हम रिएक्शंस डालते हैं, जिसका नाम है फोरियम रिएक्शंस चैनल। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर देन जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन मेरी। मेरा नाम है तान्या भाटिया। मैं अभी चंडीगढ़ में बेस्ड हूँ। आई एम मैरिड एंड आई हैव अ 2 months ओल्ड डॉटर। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ एंड ट्रैवलिंग का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। सो मेरा ये वाला चैनल, आई वुड लाइक टू डेडिकेटेडली पुट मोर ऑफ माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, just which could be around my motherhood journey, my travel stories और मेरा डांस की जर्नी। सो एज आई सेड, काफ़ी इनएक्टिव रही हूँ बट मेरी कोशिश है कि इस साल 2022 में मैं इस चैनल पे काफ़ी एक्टिव रहूँ। So as I said, I have a 2 months old daughter and मेरी entire pregnancy journey, मेरी पूरी birth story मैंने एक्चुअल में रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, विच आई वांटेड कि मेरी इस चैनल की वीडियो होती, पहली वीडियो होती 2022 की, बट वो मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट टुडे देयर वाज अ टॉपिक दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, सो आई थॉट लेट्स कीप दैट अभी बैकलॉग में। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी एंड बर्थ स्टोरी बाद में डालूंगी, but this topic is really important, which is COVID and infants. So I got contracted with COVID last week, my husband, myself and my 2 months old daughter, so हम सबको हो गया था. It was a very scary time. So and then I realized कि हम जैसे बहुत और लोग होंगे who are actually going through this. Luckily, I had a couple of my friends who had already been through this journey कि हमें क्या करना है. You're already new to this whole parenting journey and एकदम से COVID आ जाता है and you're like clueless. My pediatrician was very supportive and I had a lot of people around me who helped me out. So I just thought कि let me talk about it, कि हमने क्या किया, हमें कैसे पता चला and all. So it was actually the next day of Lodi when my husband developed symptoms and he had a high fever of 102. So we obviously isolated him and he had started taking Dolo, and we actually consulted his doctor and हमने multivitamins and there were a couple of medicines that got started for him. मैंने पूरी तरह से अपने आप को isolate कर लिया था, but then again your husband is sick, so you obviously tend to worry about him. तो मैं बार बार उसके कमरे में जा रही थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ. सो ऑब्वियसली आई न्यू दैट आई वुड बी एक्सपोज्ड. हमने मास्क डाल के रखे पूरा टाइम. इवन विद माई बेबी आई वॉज हैविंग मास्क ऑन ऑलवेज. I am breastfeeding, so obviously I had to be more careful around her. So I think 2 days after my husband got the symptoms, he started recovering a little bit, and I think on his day 3 was when I was like, something's wrong, something is really not right with me. And afternoon time, I had been checking my temperature before that, but after his day 3 when I checked, so I had also developed 101 fever. सो हमने जो कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स मल्टीपल मतलब बथेरे घर में हमने मंगवा के रखे थे. सो आई क्विकली टेस्टेड माई सेल्फ एंड आई वॉज पॉजिटिव एज वेल. सो आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इट बिकॉज हम एक ही घर में थे एंड आई वॉज मूविंग अराउंड ईजली एंड इन हिज रूम एंड आउट. सो बट बाय देन हमें पता चल गया था कि ही हैड फीवर फॉर 2.5 days, बट उसके बाद मेनली इट वॉज अबाउट कोल्ड एंड कफ. सो इट वॉज नथिंग मेजर. एंड ऑब्वियसली आई हैड कपल ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैड ऑल्सो बीन थ्रू दिस, सो उनसे भी मुझे ये पता चल गया था कि इतना स्केरी नहीं है. सो जितना न्यूज़ में, जितना मीडिया, सोशल मीडिया में दैट डर है इसका, इतने डरने की बात नहीं थी. बट स्टिल, because I had a 2 months old daughter, I had to be very careful. So once I developed symptoms, obviously I consulted my doctors as well and got the same medications. Essentially वही आपकी डोलो होगी या you will take multivitamins or anti-allergic. So but yeah, please consult your doctor, don't take my words on that. But I was totally careful around my daughter, and आई थिंक ऑन माई डे 2 मेरा फीवर भी काफ़ी कम हो गया था. आई थिंक इट वॉज अराउंड 100. फर्स्ट डे इट वॉज 101, बट डे 2 पे मेरा 100 हो गया था. एंड
on that day my daughter was sleeping the entire day. So she usually is, she doesn't sleep that much in the daytime. मतलब सोती है 2-3 hours in the morning after she takes a bath, but उसके बाद she usually is awake and active and plays. But उस दिन she was just so drowsy. तो दैट वॉज लाइक द फर्स्ट सिग्नल मेरे लिए कि ठीक है, समथिंग माइट नॉट बी राइट विद हर एज वेल, बिकॉज मैं उसको जैसे ही उसके बेसिनेट में लेटा रही थी, आई डिड नॉट इवन हैव टू रॉक हर टू स्लीप, शी वॉज जस्ट क्लोजिंग हर आईज एंड स्लीपिंग. सो आई थॉट मे बी ठीक है, एक रात पहले वो अच्छे से सोई नहीं है तो शी इज़ काइंड ऑफ कम्प्लीटिंग हर स्लीप, बट दैट वॉज ऑब्वियसली रेड फ्लैग फॉर मी. एंड रात को आई रिमेंबर रात को अराउंड 2 o'clock, once we gave her her milk, and she was about to sleep around 2:30. She usually sleeps off for good 2-3 hours after her bottle feed. But that day she woke up in half an hour and she was crying. But moreover she was crying like crazy. मतलब कि एकदम से पता नहीं क्या हो गया. Usually she cries, she looks around, she looks for me, for her father, but उस दिन she was like frantically crying. So definitely I knew this is not a hunger cry. Usually भूख लगी होती है बच्चे को तो वो cry करना शुरू करते हैं. So obviously I knew this was not a hunger cry. So I anyways I feared कि maybe इसको भी हो सकता है. सो हमने फिर सोचा कि नहीं, इसका भी हम फीवर चेक कर लेते हैं. सो हाउ डू यू चेक इन्फेंट्स फीवर, हमें तो ये भी नहीं पता था. तो आई एक्चुअली आस्क्ड माई फ्रेंड, माई पीडियाट्रिशियन, सो वट एवर थर्मोमीटर यू आर यूजिंग, यू जस्ट पुट अंडर देयर अंडर आर्म्स फॉर लाइक 90 seconds. एंड अगर 99 से ज़्यादा आता है तो दे एडवाइज यू टू टेक क्रोसिन. एंड एज पर बेबीज़ वेट वो उसकी डोज बनती है. सो इफ़ द बेबी इज़ वेइंग अराउंड 5 kg तो उसकी डोज अराउंड 0.6 ml बनती है. सो ये सब मैं ऑलरेडी डिटेल्स दे चुकी थी कि वर्स्ट केस अगर हमें लाइक हो जाता है बेबी को भी, तो वी शुड नो कि क्या करना है. तो या, एंड हमने वो अराउंड 2:30 AM पे वी चेक्ड हर टेम्परेचर एंड शी हैड लाइक 100, आई थिंक 100 के अराउंड टेम्परेचर था. सो ऑब्वियसली हम बहुत डर गए, तो हमने इमीजिएटली उसे क्रोसिन की डोज दे दी. एंड हमें सुबह से ही लग रहा था. एंड शी हैड बीन हैविंग सम कोल्ड एंड स्लाइट कफ. मतलब कफ ऐसा नहीं था कि पूरा दिन लगातार चल रहा है, लाइक 2-3 इंस्टेंसेस ऑफ कफिंग विच वर नॉट यूजली देयर. तो वो थे, तो इंडिकेशन स्टार्टिंग से थी. So and apart from just the fever, she had only cold and cough. उसके अलावा जनरल लॉस ऑफ एपेटाइट भी नहीं हुआ, विच डॉक्टर वॉज टेलिंग कि हो सकता है. लाइक शी वॉज ईटिंग वेल, शी वॉज पासिंग स्टूल प्रॉपरली, सो वो प्रॉब्लम नहीं हुई. बट या, कोल्ड एंड कफ था. सो कोल्ड के लिए अगेन द मेन थिंग दैट ऑल द डॉक्टर्स एडवाइजर्स कि उनका नोज़ ब्लॉक रहता है तो वो स्लीप भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली. सो उनका नोज़ ओपन करने में ट्राई करिए. दैट फॉर दैट यू यूज़ नेज़ल स्प्रे. सो हमने वो नेज़ल स्प्रे ऑलरेडी ले रखा था बिकॉज पहले भी उसको कोल्ड हो चुका था. सो वी यूज़ टू पुट अराउंड 2 drops in each nostril like after every 2-3 hours, or like every time before she was about to sleep हम वो 2-3 ड्रॉप्स डाल देते थे. अगेन इट वॉज वेरी ट्रिकी टू पुट दोज ड्रॉप्स. मैं लाइक बहुत ट्रबल हुआ है हमें to put those drops because वो डलवाती नहीं थी. But yeah, she felt better. And again another thing that we did was steam दिलाना. So like हमें cold होता है, हम steam लेते हैं. So बच्चों के लिए भी steam आप दे सकते हैं, which was I think very important because obviously they can't blow their noses. And अंदर कितने तक उनका mucus जमा हुआ है, even we don't know कि कितनी congestion है unless you show it to doctor. So हमने क्या किया था कि just steamer से हम steam ले रहे थे. So while she was sleeping, I held her in my lap, and my husband like pointed that steamer towards her. It's a very good steamer. I will put it the link in the description box. Ki you can actually point the steam towards the baby so they can easily take that steam. So वो हमने उसको steam दिलाई almost I think 3 times a day, like how we were also taking steam. And फॉर्चुनेटली इन 2 days उसका कोल्ड काफ़ी कम हो गया है. अभी भी इट्स नॉट कम्प्लीटली गॉन.
एंड जस्ट लाइक फॉर अस, लाइक हम भी रिकवर हो चुके हैं, बट हमें काफ़ी कफ है अभी भी, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। तो आई थिंक वो थोड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रह रहे हैं इस वेरिएंट के कोविड में। सो इवन शी हैज़ सम कोल्ड, एंड स्पेशली इन द मॉर्निंग व्हेन एवर शी गेट्स अप, तो ऑब्वियसली शी हैज़ दैट स्टफी नोज, एंड वो जब ब्रीथ करती है तो वो आवाज़ आती है नाक से कि हाँ, इट्स नॉट अ क्लियर पैसेज। And then finally we started seeing कि ठीक है, there are some material mucus in the nose, जो काफ़ी नीचे तक आया हुआ है, which you can actually easily clean, but please don't try cleaning it with your hands or any other object. So हमने actual में एक suction pump लिया है to clean it. मैंने काफ़ी reviews देखे थे कि काफ़ी बच्चों को इससे trouble होता है, एडवाइस नहीं करते हैं एंड ऑल दैट, बट आई यूज्ड इट, एंड ऑब्वियसली उस टाइम के लिए उसको एक दो बार थोड़ा अनईजी हुआ, अनईजी भी नहीं हुआ, इट ऑब्वियसली आपके नाक में कोई कुछ डाल रहा है तो आपको वियर्ड तो लगता है, सो वो हुआ, बट शी वॉज ओके एंड आई वॉज एबल टू क्लीन हर नोज, एंड आई सॉ दैट शी फेल्ट सो मच बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली नोज, वो बच्चा बता तो सकता नहीं है कि मेरा नोज ब्लॉक्ड है, सो ऑब्वियसली वंस हर नोज वॉज लिटिल क्लीन, she was able to breathe better and she was able to sleep better. So we are again on our still on our journey to recover from covid. My husband has completely recovered, उनका 7 days हो चुका है, mine 7th day आज है, but I don't have a lot of symptoms remaining except for some cold and cough, and my daughter as well, she doesn't have any fever, she only has some slight cold, so we are obviously giving her the nasal drops as well as steam. अब 3 बार नहीं दे रहे हैं हम, मॉर्निंग में दे देते हैं when she wakes up, या ज़्यादा से ज़्यादा before she sleeps at night also we give her steam and nasal drops. So hopefully this video and जो हमने 2-3 steps करे हैं, that helps you, and at all points what I would recommend is talk to your doctors, talk to your pediatrician. इतनी बड़ी बात नहीं है, सच्ची बताऊँ, मैंने जितने stats भी देखे हैं, जितने videos देखे हैं कि बच्चों को हो रहा है, बहुत माइल्ड वे में अफेक्ट कर रहा है, बट येस, यू शुड ऑलवेज हैव योर डॉक्टर ऑन द कॉल कि कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए, सो दे नो द बैकग्राउंड एंड कि हाँ, इनको हो रखा है टाइप्स. सो या, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे. मुझे लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा काफ़ी पेरेंट्स के लिए. मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी सर्च कर रही थी कि करना क्या है, एंड ये 2-3 सिंपल्स चीज़ें ही हैं. जस्ट कीप अ चेक ऑन देयर स्लीप. आपको इनिशियल सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे कि इफ़ द बेबी इज़ प्लेइंग लेस, इफ़ द बेबी इज़ स्लीपिंग मोर, and they are uninterested in things, so kuch there might be something going on, and it could be not necessarily covid, but otherwise also they might be feeling a little sick. That's one. Check for their fever अगर आपको लगे. हम तो एंड ऑल्सो व्हेन जब हमने रात को 2:30 AM पे उसका फीवर किया, आई एक्चुअली टच्ड हर फीट विच वॉज वेरी हॉट. यूजली फीट उसके काफ़ी ठंडे रहते हैं बिकॉज अभी यहाँ पे कोल्ड सीजन चल रहा है, सो मुझे तब भी लगा कि काफ़ी गर्म है. हेड, फेस और नेक से मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था क्योंकि इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आया था, बट फीट उसके काफ़ी गर्म थे. तो या, यू कैन चेक फॉर दोज अर्ली साइंस एंड देन यूज़ अ थर्मामीटर टू चेक द टेम्परेचर, एंड 99+ पे ऑब्वियसली यू विल हैव टू गिव हर सम मेडिसिन. एंड देन कोल्ड के लिए nasal sprays हैं एंड स्टीम है, विच यू शुड बी easily able to do without any डॉक्टर्स एडवाइस. आप कुछ खुद भी कर सकते हैं. एंड देन कफ के लिए कुछ अलग से ऐसा नहीं है, जैसा अगर उनका पूरा nasal पैसेज क्लियर है तो उनका कफ भी कम हो जाएगा. बट या, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीप फीडिंग देम. दे शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड, दे शुड नॉट फील लेस एनर्जेटिक. अगर नहीं भी ले रहे हैं वो अपनी फीड, उनको दे दीजिए. Just wake them up. If they keep on sleeping, just wake them up and give them their feed. That's very important for them. And yeah, another thing, actually हम breastfeed and bottle feed combination पे I am feeding my daughter, but as everyone says, mother's milk has the maximum antibodies, so I tried my best to give only my milk, and हमने थोड़ा bottle feed का usage कम कर दिया, and bottle feed only at night to make her sleep, because it keeps her stomach full for a longer time. But yeah, daytime में completely give her my feed, and I think it is very important because you're passing on all the antibodies that helped you recover to her, and that helps her to recover as well. So yeah, that's my first video on my channel on COVID and your babies. Very important topic. So अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो
सो प्लीज़ मुझे बताना। आई एम नो एक्सपर्ट एट ऑल, ये मैंने अपने कम्प्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम कॉन्फिडेंट्स जिनको आप मैसेज करके बात कर सकते हो। सो आई हैड देम, यू शुड हैव देम एज वेल। इफ नॉट, यू कैन जस्ट पुट योर कंसर्न्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। जितना मुझे पता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, इतना आई एम नो प्रोफेशनल, आई एम वेरी अमेच्योर, आई एम अ फर्स्ट टाइम मदर एज वेल, सो ऑब्वियसली मुझे भी कई चीज़ें नहीं पता होती हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती हैं। सो होपफुली यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करिएगा। मैं अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में इस चैनल में वीडियोस डालती रहूँगी। एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए if you have gone through this. Hopefully not, but if you have, how was your experience? And hopefully everything goes well for you in the end. Okay guys, bye bye.